Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are good. Welcome to this new video lecture. In this class we will be starting monoclonal antibodies, its production and application. But before going into detail, we need to know the background of antibodies, what are antibodies and how they are working. So we'll be learning today the following contents: antibody structure, human antibody isotypes, antibody enzyme cleavage products, and antibody antigen epitope interaction. And lastly, polyclonal versus monoclonal antibodies. So let's start with the first part of this content, that is antibody structure. Each antibody is composed of two identical heavy polypeptide chains and two identical light polypeptide chains. Okay. These chains are held together by interchain disulfide bonds. Each heavy and light chain is made up of folded regions called domains. Light chain contain one variable region and denoted as VL for variable light, and one constant region denoted as CL for constant light. Heavy chain contains one variable region denoted as VH and 3 or 4 constant regions denoted as CH1, CH2 and CH3. Heavy chains, they contain one variable and 3 or 4 constant regions depending upon the antibody isotype. Variable regions are named such because the amino acid sequence in this area is variable among antibodies from different B cell lineages when compared to most of the rest of antibody structure. At the very ends of the variable region over here are hypervariable regions. Here you can see light chain hypervariable regions. It is in the hypervariable region that most variability between antibodies from different lineages occurs. It is this high variability that allows very divergent conformation permutations for antibody antigen binding. Constant regions are relatively invariant for each class of antibody, either it's in light chain or in heavy chain. The basic antibody structure contains duplicate VL and VH regions. Here you can see that there are duplicate VL and VH regions which are actually forming a Y shape. These form the antigen binding site. Therefore, each antibody has two identical antigen binding sites or AB sites. All antibody isotypes except for IgE are hinged between CH1 and CH2 regions to impart flexibility to the main antibody structure. The paired variable and constant regions above this hinge are referred to as antigen binding fragment or Fab of the antibody. The paired constant regions below this hinge creates the constant fragment or FC fragment of the antibody. In addition to the basic protein structures of antibodies, there are carbohydrate components. Antibodies are naturally glycosylated carbohydrates are attached along the heavy chains.
The carbohydrate content, especially along the Fc portion of an antibody, profoundly affects many of the actions of the antibody. This include proper secretion of the antibody from the plasma cells, its kinetics in circulation, the actions of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and complement, and the chemistry related to proper radiolabel or linker attachments. तो आइए हम ये देखते हैं कि एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एक्चुअली है कैसा। हर एक एंटीबॉडी दो आइडेंटिकल हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स और दो आइडेंटिकल लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी हुई होती है। यहाँ पर आपको जो लाइट ग्रीन कलर के अंदर एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया ये हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये डार्क ग्रीन कलर का एरिया इज़ लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन है थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या डाइसल्फाइड लिंकेजेस। हर एक हैवी और लाइट चेन में फोल्डेड रीजन्स हैं जिन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। ठीक है, लाइट चेन्स के अंदर एक वेरिएबल रीजन होता है जिसे VL कहा जाता है या वेरिएबल लाइट चेन कहा जाता है, और एक कांस्टेंट रीजन होता है जिसे हम डोनेट करते हैं CL से या कांस्टेंट लाइट से। हैवी चेन के अंदर एक वेरिएबल रीजन है और 3 से 4 कांस्टेंट रीजन्स पाए जाते हैं। वेरिएबल रीजन is donated as VH and constant regions are donated as CH1, CH2, CH3 and so on and so forth. ये constant region कितने होंगे ये डिपेंड करता है एंटीबॉडी की टाइप के ऊपर। वेरिएबल रीजन्स का नाम वेरिएबल रीजन इस वजह से है क्योंकि अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस इस एरिया के अंदर वेरिएबल होते हैं एंटीबॉडीज़ में, जो कि डिफरेंट बी सेल लीनिएजेस से निकल रही होती हैं जब उन्हें हम कंपेयर करते हैं एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को। तो इस वेरिएबल रीजन के एंड पर हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं। दोनों साइड पर हाइपर वेरिएबल रीजन्स लाइट चेन में भी होते हैं और हाइपर वेरिएबल रीजन्स हैवी चेन के अंदर भी होते हैं। ये हाइपर वेरिएबल रीजन्स मोस्ट वेरिएबिलिटी रखते हैं बिटवीन एंटीबॉडीज़ जो कि डिफरेंट लीनिएजेस से आ रही होती हैं, और इनकी ये हाई वेरिएबिलिटी ही अलाउ करती है डाइवर्जेंट कॉन्फर्मेशन परम्यूटेशंस को एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग में। कांस्टेंट रीजन्स रिलेटिवली इनवेरिएंट होते हैं फॉर ईच क्लास ऑफ एंटीबॉडी। बेसिक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में डुप्लिकेट वेरिएबल रीजन्स पाए जाते हैं और डुप्लिकेट वेरिएबल रीजन्स लाइट और हेवी चेन में पाए जाते हैं। ये एक्चुअली एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट बनाते हैं। इसीलिए हर एक एंटीबॉडी एक्चुअली दो आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स रखती है। एक एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ एग्जिस्ट करती है और एक एंटीजन बाइंडिंग साइट इस जगह पर एग्जिस्ट करती है। जितनी भी एंटीबॉडी आइसोटाइप्स हैं एक्सेप्ट फ्रॉम IgE एंटीबॉडीज़ वो हिंज्ड होती हैं बिटवीन CH1 एंड CH2 रीजन, ताकि एंटीबॉडी फ्रेगमेंट फॉर्म हो सके और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। पेयर्ड वेरिएबल जो कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट है पेयर्ड वेरिएबल का जस्ट above this hinge is called as constant fragment एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट या फैब रीजन कहलाता है ये, और ये जो बिलो हिंज कांस्टेंट रीजन है पेयर्ड ये कांस्टेंट फ्रेगमेंट कहलाता है एंटीबॉडी का। इन एडिशन टू दिस बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स एंटीबॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज़ नेचुरली ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं, यानी हैवी चेन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स स्पेशली जब FC पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी में,
तो ये एंटीबॉडी की एक्शन को प्रोफाउंडली अफेक्ट करते हैं। जिस तरह से प्रॉपर सिलेक्शन है एंटीबॉडी की फ्रॉम द प्लाज्मा सेल, इसकी काइनेटिक है सर्कुलेशन में, या एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है कॉम्प्लीमेंट की, या फिर केमिस्ट्री है रिलेटेड टू प्रॉपर रेडियो लेबलिंग या लिंकर अटैचमेंट, ये तमाम फार्माकोकाइनेटिक्स या काइनेटिक पैरामीटर्स एक्चुअली डिपेंड करते हैं ऑन दी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस. So let's move further to the next topic, that is human antibody isotypes. Human antibodies are similar in general structure but are first divided into 5 classes or isotypes that could be alpha, sigma, epsilon, gamma and mu based on heavy chain structural differences, and then usually into one of two subclasses based on the type of light chain, either kappa or lambda. Isotypes provide the general antibody identification. IgA for those is composed of alpha heavy chains, IgD for those composed of delta heavy chains, and etc. The isotypes differ in their biological properties, functional locations, and ability to deal with different antigens. B cell undergo affinity maturation, improvement in antibody affinity through a selection process, which includes class isotype switching. Class switching allows daughter cells from the same activated beta cells to produce antibodies of different isotypes. Only the constant region of the antibody heavy chain undergoes class switching or undergoes changes during class switching. The variable region and the antigen specificity remain unchanged. B cell expressing plasma membrane bound IgM and IgD mature B cells are activated upon encounter with a specific antigen and begin to proliferate and produce secretory IgM and IgD. With further activation by the antigen or other stimuli, these mature B cells differentiate into cells that produce increasing amount of secreted immunoglobulins. And start to produce immunoglobulin isotypes other than IgM and IgD. This process is called as immunoglobulin class switching. Factors in the B cell environment include hormones secreted by T cells, cytokines direct the isotype switching. The progeny of a B cell can produce antibodies, all specific for the same antigen but with the ability to produce the effector function appropriate for each antigenic challenge. Class switching is triggered by cytokines. For example, interleukin 4, IL-4 stimulate class switching from IgM, IgD to IgE1 and IgE, whereas interleukin 5, IL-5 stimulates class switching from IgM, IgD to IgA. Interleukins are actually the type of cytokines that is produced by leukocytes and lymphocytes during the immune response. Here in the diagrams you can see that there are 5 different types of antibodies: IgG, IgD, IgE, IgA and IgM. There are certain structural differences in it. IgA and IgM contains some J chains and secretory components. IgG is the highest opsonization and neutralization activity, contains highest opsonization and neutralization activities, and this can be classified into subclasses, further subclasses that are Ig1, Ig2, Ig3 and Ig4. IgM are produced first upon antigen invasion and increases transiently. IgA antibodies are expressed in mucosal tissues and they forms dimers after secretion.
IgD's function is unknown and IgE is involved in allergic reactions. The levels of circulating antibodies to a specific antigen is shown over here. That amount of antibody in serum for number of days is increased. Likewise, IgM is initially increased and then it declines but it is replaced by IgG antibodies, and this is the mechanism of class switching. ह्यूमन एंटीबॉडीज़ की डिफरेंट आइसोटाइप्स हैं. जनरल स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज़ का सेम रहता है, लेकिन 5 क्लासेस में डिवाइड होती हैं, आइसोटाइप्स में डिवाइड होती हैं बेस्ड ऑन हैवी चेन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, और 2 क्लासेस के अंदर ये डिवाइड होती हैं बेस्ड ऑन लाइट चेन्स स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस. हैवी चेन्स के अंदर अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो दे कैन बी अल्फ़ा, सिग्मा, एप्सिलॉन, गामा एंड नियो, और अगर हम इन्हें लाइट चेन्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं तो दे कैन बी ईदर kappa और lambda. IgA is composed of alpha heavy chains and IgD is composed of beta heavy chains, and so on and so forth. आइसोटाइप्स बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करती हैं, फंक्शनल लोकेशंस और एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट एंटीजेंस डिफ़र करते हैं डिफरेंट आइसोटाइप्स में. बी सेल जब एफिनिटी मैचुरेशन से गुजरते हैं, यानी एंटीबॉडी एफिनिटी थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस इम्प्रूव करते हैं, तो ये एक क्लास स्विचिंग या क्लास आइसोटाइप स्विचिंग करवाते हैं. क्लास स्विचिंग बी सेल के डॉटर सेल्स को ये अलाउ करती है कि सेम एक्टिवेटेड बी सेल्स डिफरेंट आइसोटाइप्स एंटीबॉडीज़ की प्रोड्यूस करेंगे. सिर्फ जो कांस्टेंट रीजन है एंटीबॉडी का हैवी चेन्स के अंदर, वो ड्यूरिंग क्लास स्विचिंग चेंज होता है. वेरिएबल रीजन्स या फिर एंटीजन स्पेसिफिसिटी सेम रहती है या अनचेंज रहती है. बीटा सेल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड IgM, IgD एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, मैच्योर बी सेल्स, ये एक्टिवेट होते हैं जब कोई स्पेसिफिक एंटीजन को इनकाउंटर करते हैं, और जैसे ही स्पेसिफिक एंटीजन को इनकाउंटर करते हैं तो प्रोलिफरेशन स्टार्ट करते हैं और IgM और IgD सिक्रीट करना स्टार्ट करते हैं. फर्दर एक्टिवेशन एंटीजन से जब होती है या अदर स्टिमुलाई से होती है, तो ये मेच्योर बी सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू सेल्स जो कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सिक्रेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करेगी, और दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप्स other than IgM and IgD. This process is called as immunoglobulin class switching. Factors जो B cell environment को स्टिमुलेट करते हैं वो हार्मोन्स हैं सिक्रीटेड बाय टी सेल्स या साइटोकाइंस. जो प्रोगेनी है सिंगल बी सेल की, इट कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ जो कि स्पेसिफिक होती हैं फॉर सेम एंटीजन, लेकिन इनकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस द इफेक्टर फंक्शन अप्रोप्रिएट फॉर एंटीजेनिक चैलेंज इज चेंज. क्लास स्विचिंग एक्चुअली ट्रिगर होती है डिफरेंट टाइप के साइटोकाइन से, लाइक इंटरल्यूकिन 4 है, ये क्लास स्विचिंग करते हैं IgM या IgD की टू IgG एंड IgE. इंटरल्यूकिन 5 स्टिमुलेट करते हैं क्लास स्विचिंग फ्रॉम IgM टू IgA. Interleukins actually type of cytokines that are produced by leukocytes and lymphocytes during the immune response. So let's now learn antibody enzyme cleavage products. The basic structure of the antibody of an isotype is fundamentally similar. The functional differences of isotypes are to a large extent dictated by structural variations and chemistry that connects the Fc portions of antibodies and impart particular biological functions. It is the fragment of the fundamental antibody structure, the Fab or Fab2 and variable hypervariable regions that provide the frontier work in diagnosis and therapy.
Useful antibody fragments are produced by reduction of hinge region disulfides or digestion with proteolytic enzymes. Today, these and other antibody products can be produced through use of recombinant DNA technology. बेसिक एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है किसी भी आइसोटाइप का वो सिमिलर होता है, ये फंडामेंटली सिमिलर होता है. जो फंक्शनल डिफरेंसेस आइसोटाइप्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं लार्जर एक्सटेंट पर, वो डिक्टेट होते हैं बाय स्ट्रक्चरल वेरिएशंस और केमिस्ट्री से. वो स्ट्रक्चरल वेरिएशन और केमिस्ट्री जो एक्चुअली एफसी पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ को कनेक्ट करती है और एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन रखती है. ये फ्रेगमेंट जो कि फैब फ्रेगमेंट है, वेरिएबल और हाइपर वेरिएबल रीजन्स रखता है और ये फ्रंटियर वर्क होता है का काम करता है डायग्नोसिस इन थेरेपी में, क्योंकि ये एक मेन रीजन है जो कि एंटीजन स्पेसिफिक बाइंडिंग रखेगा. यूजफुल एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ हिंज रीजन डाइसल्फाइड्स और डाइजेशन विद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लाइक पेप्सिन क्लीवेज से आपको इस तरह से डाइसल्फाइड के फैब फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे और पेपेन क्लीवेज से आपको hinge breakage से fat fragments मिल जाएंगे. And these antibody products can be produced through the use of recombinant DNA technology as well. So how antibody antigen epitope interacts? The portion of the antibody responsible for antigen binding is the complementary determining region or CDR located at the end of the variable regions. CDR in the heavy chain variable region and light chain variable regions forms an antigen binding pocket that contact epitopes or antigens directly. The conformation of this pocket dictates both the extremely fine discrimination antibodies display for proper antigens and the extreme strength with which these antigens are bound. Affinity or Ka is the numerical representation of the strength of a ligand binding site interaction. Antibody binding affinity or Ka values for low affinity antigen antibody complex is usually between 10 raised to power 4 to 10 raised to power 5 liter per mole and improves through the affinity maturation process. For high affinity antigen antibody complexes, the binding affinity can be as high as 10 raised to power 11 liter per mole. This is extremely high and explains why high affinity antibodies bind antigen very tightly and remains bound for relatively longer times. Depending on the isotype of the antibody, there are between 2 and 10 antigen binding sites that exist over here and here per molecule. These affinities are additive, and this strength of multiple interaction is the avidity of the antibody. Antibodies usually have both high and avidity. A minimum of 2 antigen binding sites are available for a normal IgG antibody. If the individual binding site affinity is relatively low, the avidity can compensate and provide excellent binding strength. It is the characteristic of high affinity coupled with typically high avidity that enables monoclonal antibodies to be attractive candidates for radiolabeling. Monoclonal antibodies are extremely desirable in locating an epitope that is very unique or exclusive on a desired target tissue. The specificity of the antibody epitope interaction is often superior to that of many chemically derived diagnostic and imaging agents. By their very nature, antibodies, especially those produced after multiple antigen exposures,
are extremely discriminating with regard to the tissue or target they bind. This is ideal when radiolabeling antibodies. This accuracy improves target to non-target ratio when attached to imaging isotopes, thus imaging quality is improved. Second, precision delivery of isotopes with particular emission is made possible. And finally, there may be a reduction in the amount of radionuclide activity administered to the patient in order to achieve the goals of the procedure, thereby minimizing patient and personal exposure. एंटीबॉडी का वो पोर्शन जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीजन बाइंडिंग के लिए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन कहते हैं या CDR रीजन कहते हैं. एंड देयर कुड बी मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स लोकेटेड एट द एंड ऑफ द वेरिएबल रीजन्स. CDRs वेरिएबल लाइट चेन्स में और वेरिएबल हैवी चेन्स के अंदर एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट्स बनाते हैं जो एक्चुअली एपिटोप्स या एंटीजन्स के साथ कांटेक्ट करता है डायरेक्टली. ये कन्फर्मेशन या पॉकेट्स डिक्टेट करते हैं कि एक्सट्रीमली फाइन डिस्क्रिमिनेशन एंटीबॉडीज़ डिस्प्ले करें फॉर प्रॉपर एंटीजन and the extreme strength with which the antigens are bound. Affinity value या Ka value is the numerical representation of the strength of a ligand binding site interaction. यानी इस ligand binding site interaction की जो strength है वो affinity value से या Ka value से define की जा सकती है. एंटीजन बाइंडिंग एफिनिटी लो एफिनिटी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूजुअली होती है 10⁴ to 10⁵ लीटर पर मोल, और ये इम्प्रूव कर सकती है थ्रू दी एफिनिटी मैचुरेशन प्रोसेसेस. हाई एफिनिटी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस में ये बाइंडिंग एफिनिटी कुड बी 10⁻11 लीटर पर मोल. एक्सट्रीमली हाई एफिनिटी बाइंडिंग वैल्यू है, तो ये एक्सप्लेन करती है कि हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज़ बाइंड करेंगी एंटीजन्स के साथ बहुत टाइटली और वो बाउंड रहेंगी फॉर रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स तक. डिपेंडिंग ऑन द आइसोटाइप ऑफ द एंटीबॉडीज़ 2 से लेकर 10 तक एंटीजन बाइंडिंग साइट्स एग्जिस्ट करती हैं एक एंटीबॉडी के अंदर पर मॉलिक्यूल. ये एफिनिटीज़ एडिटिव हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं फॉर मल्टीपल इंटरेक्शंस और एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी कहलाती हैं. एंटीबॉडीज़ यूजुअली हाई एफिनिटी और हाई एबिलिटी रखती हैं और मिनिमम 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल होती हैं फॉर नॉर्मल IgG एंटीबॉडी. अगर एक इंडिविजुअल बाइंडिंग साइट की एफिनिटी रिलेटिवली लो है तो एबिलिटी कंपनसेट करती है और ये प्रोवाइड करती है कि एक्सेलेंट बाइंडिंग स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो सके उस एंटीबॉडी में. ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है हाई एफिनिटी का, जो कि कपल होता है विद टिपिकली हाई एबिलिटी, जो एक्चुअली एंटीबॉडी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को इनेबल करता है टू बी अट्रैक्टिव कैंडिडेट्स फॉर रेडियो लेबलिंग. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक्सट्रीमली डिज़ायरेबल हैं इन लोकेटिंग एन एपिटोप जो कि यूनिक हो और एक्सक्लूसिव हो ऑन अ डिज़ायर्ड टारगेट टिश्यू. और इसी स्पेसिफिसिटी की वजह से एंटीबॉडी एपिटोप इंटरेक्शन की वजह से केमिकली डिराइव डायग्नोस्टिक या इमेजिंग एजेंट्स बनाए जाते हैं यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. इसी नेचर की वजह से एंटीबॉडीज़ की मल्टीपल एंटीजन एक्सपोजर की वजह से या एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन की वजह से टू द टिश्यू और टारगेट these can be used for diagnostic and imaging agents and they are ideal when radio labeling antibodies. ये एक्यूरेसी इनकी इम्प्रूव करती है टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो को जब इन्हें इमेजिंग आइसोटोप्स के साथ अटैच किया जाता है, thus imaging quality is improved. Secondly, precision delivery isotopes की with particulate emission is possible. और thirdly,
reduction in the amount of radionuclide activity जो कि actually radionuclide administered होता है to the patient in order to achieve the goal of the procedure, thereby minimizing patient and personal exposures. So let's now discuss the two types of antibodies, polyclonal versus monoclonal antibodies. A single plasma cell is capable of secreting over 10 raised to power 8 antibodies per day. When a plasma cell secretes antibodies, each is exactly the same in all aspects. Their isotype, Fc, and Fab components are identical. However, a normal humoral immune response produced by many plasma cells from the selection of many compatible and useful B cell lineages producing a pooled polyclonal response. This polyclonal response ensures through overlap in antigen binding and provides a more effective antibody response to antigen. This is ideal for disease eradication. For science and medicine, this creates inexactness and imprecision. To provide precision and reproducibility, single clone products, monoclonal antibodies are required. Until 1975, the inability to reliably create monoclonal antibodies was a major impediment to the application and use of antibodies. The ability to combine the attributes of a perpetual myeloma clone with those of an antibody secreting cell with limited life provided these steps necessary to propel the areas of science and medicine forward in this front. Propagation and production of characteristically predictable unlimited amount of monoclonal antibodies began the pioneering into their applications. पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या हैं और किस तरह से आती हैं। एक सिंगल प्लाज्मा सेल केपेबल है सिक्रीटिंग ओवर 10⁸ एंटीबॉडीज़ पर डे। जब प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करता है तो हर एंटीबॉडी एग्जैक्टली सेम होती है इन ऑल एस्पेक्ट्स। उनकी आइसोटाइप्स Fc और फैब कंपोनेंट्स आइडेंटिकल होते हैं। हाउएवर जब एक नॉर्मल ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स from the selection of many compatible and useful B cell lineages produce a pooled polyclonal response. ये पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स ये इंश्योर करता है थ्रू ओवरलैपिंग इन एंटीबॉडी बाइंडिंग कि एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोवाइड करे इफेक्टिव एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू द एंटीजन. This type of response is actually ideal for disease eradication. लेकिन साइंस या मेडिसिन में ये इन एग्जैक्टनेस या इन प्रिसीजन क्रिएट करता है. It provide precision and reproducibility. हमें सिंगल क्लोन प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड होती हैं. 1975 तक रिलायबली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं था या एक मेजर इम्पेडेंट था फॉर द एप्लीकेशन इन यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज़. एक मेजर ड्रॉबैक था. एक एबिलिटी जिसको कंबाइन करके एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके माइलोमा सेल्स को क्लोन किया जा सके और उनसे एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स लिए जा सकें विद लिमिटेड लाइफ. इस एबिलिटी ने ये प्रोवाइड किया कि साइंस और मेडिसिन की एप्लीकेशंस के थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो सकें. सो व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? Human body secrete antibodies in response to foreign antigens. This phenomena is manifest through the B cell lineage with help from T cells and other components of the immune system. The focus of this discussion is on the humoral response and on the antibody response that results. This antibody response can be said to originate in plasma cells, although the antibody response is much more complex, originating much further upstream from the terminally differentiated plasma cells.
A normal humoral immune response results in multiple clonal lineages of B cells which terminally differentiate into antibody secreting plasma cells, resulting in a polyclonal antibody response. For scientific and medical study and use, only one antibody and so one plasma cell clone is wanted. ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडी सिक्रीट करती है इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजेंस. ये फिनोमेना एक्चुअली मैनिफेस्ट करता है कि बीटा सेल लीनिएज से टी सेल्स की मदद से डिफरेंट कंपोनेंट्स इम्यून सिस्टम के बन सकें. इस डिस्कशन का फोकस एक्चुअली ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के ऊपर है और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो एक्चुअली एंटीबॉडी रिस्पॉन्स रिजल्ट करता है. ये एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा सेल से ओरिजिनेट होता है. ऑल्दो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स होता है if it is originating much further upstream from the terminally differentiated plasma cells. नॉर्मल ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में मल्टीपल क्लोनल लीनिएजेस बनेंगी बी सेल्स से जो टर्मिनली डिफ्रेंशिएट होंगी इनटू एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स जो कि रिजल्ट करेगा इनटू अ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स. लेकिन साइंटिफिक या मेडिकल स्टडी के यूज़ के लिए हमें एक एंटीबॉडी चाहिए होती है जो कि एक प्लाज्मा सेल क्लोन से ही लीनिएज हो. So let's see what are the major differences between the polyclonal antibodies and monoclonal antibodies. Polyclonal antibodies are antigen specific and monoclonal antibodies are epitope specific for an antigen. Polyclonal antibodies are derived from many B cell clones that produce antibodies recognizing different epitopes of an antigen, whereas monoclonal antibodies are derived from one specific clone of B cell that recognizes one particular epitope of an antigen. Polyclonal antibodies are produced by host animal immunized with the substance of interest usually 3 or 4 times. Monoclonal antibodies are produced by animal cells artificially in tissue culture using hybridoma technique. Polyclonal antibodies are cheap to produce and generally produced in rabbits and guinea pigs for small amounts and sheep or goats for large amounts. Monoclonal antibodies are expensive to produce and generally produced in mice. पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंटीजन स्पेसिफिक होती हैं जबकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एपिटोप स्पेसिफिक होती हैं किसी भी एंटीजन के ऊपर. बीटा सेल क्लोन से डिराइव होती हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट एपिटोप्स फॉर ऑफ एन एंटीजन. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ डिराइव होती हैं एक स्पेसिफिक क्लोन से जो बीटा सेल से आता है जो रिकॉग्नाइज करता है एक पर्टिकुलर एपिटोप एंटीजन के ऊपर. पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होस्ट एनिमल सेल्स में या होस्ट इम्यूनाइज्ड एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं और यूजुअली 3 या 4 टाइम्स सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट से प्रोड्यूस होती हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एनिमल सेल्स में आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होती हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक से यूजिंग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ cheap हैं in production whereas monoclonal antibodies are expensive and they are generally produced in mice, but nowadays they can be produced through recombinant DNA technology as well. There are two basic issues that are needed to be addressed before practical scientific and medical uses for antibodies could realistically be investigated and applied. First was the issue of the limited lifespan of plasma cells limiting the supply of any monoclonal antibodies of interest, and the second was the only polyclonal antibodies could be obtained from a culture of antigen stimulated B cells. Monoclonal antibodies could be painstakingly obtained by isolating a single plasma cell, but that was simply a result of both good fortune and hard work. So in next video lecture we will be continuing our discussion on the monoclonal antibodies and we will be discussing production of monoclonal antibodies. Thank you for patiently listening to this lecture. Take care of yourselves. Allah Hafiz.